my dear learners, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to see how to plan your timetable to crack UPSC Civil Service Examination 2022. I have started a batch. It's going to start from 1st of March and I have named it Nischay, which means to be determined. Once you decide, you do not deviate from your timetable, you do not deviate from your plan. Okay, so let's get started. It's a life-changing experience from being an aspirant to an achiever. Just like this plant, you have to grow every single day. I will have a lot of conversations about hard work, discipline, how not to procrastinate. But right now, it's time to be serious. So as you already know, the first phase is starting from March 2021 to June 2021. This is Nischay phase 1. And here your priority is going to be optional, answer writing, GS preparations and online lessons. So good morning at 7 a.m. That is important. You have to have 7 hours of sleep and then wake up at 7 a.m. It depends now. You can modify the timings. Newspaper reading 7:30 to 8:30, not more than an hour. Do not spend more than an hour reading Hindu or Indian Express, whatever you like. Now sharp at 9 a.m. you're going to sit for your slot 1 study and that is going to be optional for 3 hours. So it can be any subject of your choice. Download the syllabus first of all and download last 5-year question papers of your optional subject and only then start reading the subject. Let's move on to 12 p.m. to 1 p.m. slot. यहाँ पे you're going to write answers. Optional subject से शुरू करो. आपने जो topic पढ़ा है, you already have last 5-year questions. Choose a couple of questions, 1 or 2 questions and write it down. And only use A4 size sheets for your answer writing and also notes making. A4 size पे आदत डालनी पड़ती है लिखने की on this blank paper so that जब आप mains में actually बैठेंगे you'll be very comfortable. Now talking about leisure time, which everybody must be waiting for by now, and I have to tell you, being UPSC Civil Service aspirants, you need to plan it wisely. I'll be talking about it in detail in the upcoming video. How to use your 2 hours of break wisely. Now let's talk about slot number 2, that is from 3 p.m. to 5 p.m. where you're going to study general studies. Okay, I have planned it in a certain way that you'll find out in the later part of the video. But यहाँ पे आप general studies अब पढ़ोगे इस 2 घंटे में, and you'll start with your NCERTs obviously. Now talking about 6 p.m. to 8 p.m. slot, this is one of the most important slots, revision slot. जो slot number 1, 2 में पढ़ा, दोनों slots में you have to revise the notes. Newspaper current affairs पे notes कैसे बनानी है, I'll let you know in a separate video. I'm asking you not to skip this slot because the more you revise, the more you can retain information for a longer period of time. From 9 p.m. to 11 p.m. you are going to study general studies. This is your slot number 3. Now keep watching the video. A very important part is going to come. अब types of learners के बारे में जानते हैं. ये psychological facts हैं. ओवरव्यू समझाती हूँ अभी, बाद में हम डिटेल पे इस पे चर्चा करेंगे. तो हार्ड लर्नर्स होते हैं और स्मार्ट लर्नर्स होते हैं. हार्ड लर्नर्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते. काफ़ी होते हैं हम में से जिनके मार्क्स कम आते हैं जबकि हम 18 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं. तो उनका स्टडी प्लान कुछ ऐसा होता है कि एंशिएंट इंडिया अगर सब्जेक्ट उन्होंने लिया तो 7 दिन तक वही पढ़ते रहते हैं वो. ठीक है, राइट. स्मार्ट लर्नर क्या करता है? स्मार्ट लर्नर के तरीके भी अलग होते हैं और उसका प्लान भी एकदम इफेक्टिव होता है. सो मैं आपको वो सीक्रेट आज बताती हूँ. See, now there are 2 slots, ठीक है, जिसमें आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो. स्लॉट नंबर 2 एंड स्लॉट नंबर 3. सो पेयर अप 2 सब्जेक्ट्स. एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी को आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे पढ़ोगे. ठीक है. ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को पेयर कर दिया जो आप ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को पढ़ोगे. इससे हो क्या रहा है? यू आर रीडिंग 4 सब्जेक्ट्स इन 1 वीक एंड यू आर नॉट बोर्ड. आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो, आप इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस से पढ़ रहे हो एंड आप 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हो धीरे धीरे. सो दिस इज अमेजिंग, राइट. अब दूसरा प्लान क्या हो सकता है? जनरल स्टडीज तो पढ़ना है दोनों स्लॉट्स में, तो स्लॉट नंबर 2 में मैं एक फिक्स सब्जेक्ट ले लेती हूँ. फॉर इंस्टेंस एंशिएंट हिस्ट्री. ठीक है, तो मैं मंडे टू सैटरडे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूंगी. मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेंदी है, तो मैं उसको फिक्स कर लेती हूँ. लेकिन स्लॉट नंबर 3 में मैं मंडे को ज्योग्राफी, ट्यूसडे को पॉलिटी, वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स, थर्सडे को सोसाइटी. तो स्लॉट नंबर 3 के सब्जेक्ट्स में बदलते रहूंगी, राइट. सो दिस इज अगेन अ स्मार्ट वे टू cover more subjects in 1 week. In the next week you change the fixed subject to something else like medieval history and for 7 days you fix it and keep changing your slot number 3 subjects. ठीक है.
Now from 5 p.m. to 6 p.m. take out the time to work out, walk, right? If you're not working out in morning, अगर आप workout नहीं करते तो walk करना ज़रूरी है. Some form of physical activity is extremely important. That keeps you going. It gives you a lot of strength and आपका mind भी fresh रहता है, ठीक है? So this is very important part of your preparation. So by the end of this phase of Nishchay, phase 1, March 2021 to June 2021, history, geography, society, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ये सब कुछ कवर हो जाएगा विद दिस टाइम टेबल इन दिस पर्टिकुलर फेज. यस, एंड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटीज you will touch your advanced level books. Now forget your Sunday breaks, going out with friends, binge watching. No breaks on Sundays as well. For 1 year, forget it. Sunday will be your weekly revision day. जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा Monday to Saturday, you're going to revise it on Sunday. And एक essay भी लिखना है जिसका टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे बताया जाएगा. If you honestly follow this, it's for your good, right? तो आपको वो करना चाहिए, करना होगा. In fact, to clear this examination, do join the Telegram channel. You are going to get PDF materials there for your preparation. Thank you so much for watching the video. The batch Nishchay phase 1 starts from March 2021 onwards, and the announcement for upcoming lessons will be made on the Telegram channel. Do not forget to like, share, comment and subscribe. Please subscribe to the YouTube channel. Share the videos to help many more aspirants जो expensive coaching or materials afford नहीं कर पाते हैं. Please do help them, and I'll see you in the next one.